हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन. नमस्कार. How are you all? I hope all of you are doing well and good, right? Today I have come up with a new topic of communication, which is known as types of communication, as you can see on the picture, right? So as said, verbal communication, when you are talking to a person by using a language, okay, it is getting transmitted through air, right? So air is the channel here, channel of communication, right? तो जब हम भाषा का इस्तेमाल करके बातचीत करते हैं तो यहाँ पे हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है इसको ट्रांसमिट करने के लिए दूसरे इंसान तक, राइट? तो यहाँ पे एयर है चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है? तो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बोल के बात करना, जो कि इनके कानों को सुनाई देगा और सुनाई देने के बाद वो डिकोडिंग करेगी मैसेज को, ठीक है? डिकोडिंग याद है ना आप लोगों को? अगर नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियो जाके कृपया करके देख लीजिए व्हाट एग्जैक्टली डिकोडिंग इज. तो जब सेंडर है वो एनकोड करके थ्रू अ लैंग्वेज बात करता है रिसीवर के साथ, रिसीवर उसको सुन के मैसेज को डिकोड करता है. देन डिकोड करने के बाद फिर उसको सेंडर को एक मैसेज करता है विद अ लैंग्वेज, बाय यूजिंग अ लैंग्वेज. सो लैंग्वेज इज अ कॉमन फैक्टर ओवर हियर विच इज ऑल्सो नोन एज अ चैनल, राइट? सो विच इज ऑल्सो नोन एज अ चैनल. Understood? So verbal communication means interacting with others by using a language. Okay? So yes, when we are interacting with others by using a language, again verbal communication is being divided into two types. Okay? How many types? Two types. One is written verbal communication and oral verbal communication. ठीक है? तो जब हम बोल के बातचीत करते हैं या फिर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या हम सिर्फ बोल के बात करते हैं? नहीं. सपोज मान लो मुझे बोलना नहीं आता है, आई कैन नॉट स्पीक. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट थिंग्स फॉर यू टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड. if I can write, or if I am writing to make you people understand things, in this case which is known as written communication. ठीक है? तो जब हम भाषा के इस्तेमाल करते हैं या फिर हम बोल के बातचीत करते हैं या फिर हम लिख के बातचीत करते हैं, है ना? तो जब हम लिख के बातचीत करते हैं हम उसको बोलते हैं written verbal communication. ठीक है? तो यहाँ पे मैंने written verbal का कुछ एग्जाम्पल लिया है और oral verbal का कुछ एग्जाम्पल लिया है, राइट? So whichever examples are being given on the slide, right? These examples are very much important for your upcoming examination because these examples are available in your syllabus. So please note down the examples, not right now, don't worry, because as said we are going to give you detailed notes. No need to write anything, but keep this in your mind. In future you are going to write report, memos, not momos, memos, emails, illustration. These things you are going to write in your examination paper. And let me tell you one thing, these things are not only meant for examination but also in future when you will be in a job, you are going to definitely write email for day-to-day conversation. So do not only consider these examples as examples, but consider these things for your upcoming future also, right? So yes, so these are the example of written verbal communication and these are the example of oral verbal communication, like face-to-face communication, telephone communication, or dictating letters, group discussion, meeting, speech. So these are the common examples of face-to-face communication
and if you know more, please comment below. We are definitely going to reply you because you know things. एंड जैसे कि मैंने बोला, कम्युनिकेटिव इंग्लिश खाली सब्जेक्ट नहीं है जिसको कि पढ़ा जाए, ये डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है जो कि आपको फ्यूचर में डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो आपको भी पता है कि ओरल वर्बल कम्युनिकेशन का और सारे एग्जाम्पल्स क्या है, तो जितना आपको पता है वो दिमाग में रखो, आपको एग्जाम में वो चीज़ें लिखनी भी है. बट दीज आर द एग्जाम्पल वाई आई हैव टेकन, because these are the things which will be required in the time of interview and when you will be there in a job, right? So these are the things not only meant for exam preparation but also for your interview preparation as well as your job life preparation, right? तो जब ये क्वेश्चन आएगी, आप जब वर्बल लिखोगे ना, आपको ये ऐसे एक डायग्राम बना के लिखना है, व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन, व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, एंड दीज आर द एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू राइट. एंड in the end of the video, I am going to prepare a diagram where the type of communication I am going to illustrate in a diagrammatic format, right? So stay tuned in the video. So yes, this is the part 2 of types of communication. In this video, we have discussed verbal communication, definition of verbal communication, types of verbal communication, oral verbal communication, oral written communication, right? So this is what verbal communication is all about, and in the next video, in the next part, we are going to discuss non-verbal communication and types of non-verbal communication. And to know non-verbal communication and to get more update, stay tuned with this series, right? So yes, in the next video, we are going to discuss non-verbal communication as said. Thank you so much all of you for listening. Have a good day. Bye all. Thank you.